Dear students and other viewers, Assalamu alaikum. Today I have picked up the very first lesson from the prose section from your book. I am talking about class 10th. The very first lesson is Footprints Without Feet. So it's written by Herbert George Wells. So we shall be talking about Herbert George Wells in this first lecture. So Herbert George Wells, he was an English novelist. He was from England and he was a journalist, he was a sociologist, and he was a historian. So he was a prolific writer and he has written about 100 books, and about 50 of them are novels. So he was a famous novelist. Wells was a very accomplished fiction and non-fiction writer. So he was both a fiction writer as well as a non-fiction writer. What does this fiction and non-fiction mean? By fiction, we generally understand it's a literary type using invented or imaginative writing instead of real facts, usually written as prose. Or simply, you can keep in mind that it's not based on actual events. ये एक ऐसी लिखाई है जिसमें इमेजिनेशन तसव्वुर की बुनियाद पर चीज़ों को लिखा जाता है और इसमें एक्चुअल वाक़यात जो होते हैं वो नहीं होते. इट्स नॉट बेस्ड ऑन द एक्चुअल इवेंट्स. सो जो नॉन फिक्शन है, इट्स एक्चुअली दीज आर द रिटन वर्क्स इंटेंडेड टू गिव फैक्ट्स और ट्रू अकाउंट्स ऑफ रियल थिंग्स एंड इवेंट्स. Like we have encyclopedias, we have biographies, we have manuals for certain things. So these are actually based on real facts and real events. So he was equally confident in writing both the things, fiction as well as non-fiction. He wrote for more than 60 years, and his early science fiction novels earned him the title the father of science fiction. He is known as father of science fiction for the very reason. Okay, so about his personal life, we should know the name of his father. He's Joseph Wells, the mother Sarah Neal, and he was himself the fourth and the last child. So his parents had 4 children and he was the last one. First, he started reading books from the local library and then from his mother's workplace. जो घर के मोहल्ले में और स्ट्रीट में उनकी लाइब्रेरी थी वहाँ पढ़ता था. इसके बाद जहाँ उसकी माँ की ड्यूटी थी वहाँ जाकर वो पढ़ता था. इन हिज अर्ली टीन्स वेल्स ऑल्सो वेंट टू वर्क एज ए ड्रेपर्स असिस्टेंट. क्लॉथ मर्चेंट जो होता है ड्रेपर, तो उसके पास थोड़े टाइम के लिए उसने एज एन असिस्टेंट काम भी किया है. ही वॉन अ स्कॉलरशिप टू द नॉर्मल स्कूल ऑफ साइंस वेयर ही लर्न अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड बायोलॉजी अमंग अदर सब्जेक्ट्स. तो ये चीज़ें उसने पढ़ी होंगी ग्रेजुएशन लेवल में. इन 83 वेल्स बिकेम ए टीचर एट मिडहर्स्ट ग्रामर स्कूल. तो उसके बाद तो एक टीचर की हैसियत से भी इन्होंने थोड़ा सा काम किया है. सो वेल्स ऑल्सो डिवोटेड मच ऑफ हिज टाइम टू बिकमिंग अ राइटर. लिखने का तो इससे बहुत शौक था. ड्यूरिंग कॉलेज ही पब्लिश्ड ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट टाइम ट्रैवल कॉल्ड द क्रॉनिक आर्गोनॉट्स. So which foreshadows his future literary success. तो ये इसने लिखा था. ये किताब कॉलेज पीरियड में ही इसने लिखी थी. शॉर्ट स्टोरी है ये. Similarly, about his marriage, in 1891 Wells married his cousin Isabel Mary Wells, but the union didn't last. तो इन्होंने अपनी कज़न के साथ शादी की थी लेकिन ये ज़्यादा देर तक शादी कायम नहीं रह सकी. Wells married with एमी कैथरीन, जिसको शॉर्ट में जैन कहते हैं, इन 1895 आफ्टर ही ऑफिशियली डिवोर्स्ड इज़ाबेल. इज़ाबेल को इसने तलाक देकर फिर जैन के साथ शादी कर ली. ही एंड जैन हैड 2 चिल्ड्रन टुगेदर. इनके 2 बच्चे हो गए थे फिर जैन के साथ. एक बेटा था इनका जॉर्ज फिलिप एंड फ्रैंक, इनकी दूसरा बच्चा था. फ्री थिंकर अबाउट सेक्स एंड सेक्सुअलिटी, वेल्स डिडंट लेट मैरिज स्टॉप हिम फ्रॉम हैविंग अदर रिलेशनशिप्स. ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि जो वेस्टर्न लोग हैं, ऐसे स्कॉलर्स हैं बड़े बड़े, तो ये सेक्स एंड सेक्सुअलिटी को जिस इंटरटेनमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और शादी को कोई मुहर्रम रिश्ते के तौर पर नहीं मानते हैं.
So that's why he had some extramarital relations with a lot of people. So he joined in 1903 the Socialist Fabian Society. So he had inclinations towards this socialist thought. Well, soon collared with the society's leaders, among them was George Bernard Shaw. तो इसको एग्रीमेंट नहीं होते थे इनके आइडियाज़ के साथ. तो एक बड़ा स्कॉलर जो है जॉर्ज बर्नर्ड शाह, ही वॉज हिमसेल्फ सोशलिस्ट. तो उनके साथ इनका फिक्री तजाद भी हुआ था किसी मसले पर. ही यूज्ड टू बिलीव दैट वार वाज अ लेसन फॉर द वर्ल्ड. Basically, he favored war, and he thought that it was to teach lesson for certain people because they don't understand the motivations and other things. So at that time, war becomes a necessity. So Wells believed in the theory of eugenics. Okay, so this is the theory of eugenics. You must study what's it all about. It's basically a philosophy or a practice which educates the improvement of human heredity. ये एक ऐसी तालीम है, ये ऐसा तरीके सोच है जिसे कहा जाता है कि हम इंसानों की जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी फैक्टर जो होता है किसी नस्ल में या किसी ख़ानदान में, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं अगर हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करेंगे. थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी अच्छे भले आदमी जो किसी इंटेलिजेंट हेरिडिटिकली अगर हम देखें. सॉरी फॉर इंटरप्शन, बीच में कॉल आ गई थी, सो आई वाज आंसरिंग दैट. So we were talking about this theory of eugenics. Okay, it's a philosophy or a practice that some people believe that human heredity can be improved through selective breeding. It means that कि अगर कोई लड़की जो है किसी अच्छे भले ख़ानदान से हो, जो इंटेलिजेंट लोग हों, इंटेलिजेंट ख़ानदान हो, उसकी शादी किसी ऐसे लड़के से हो जाए वो भी इंटेलिजेंट ख़ानदान से हो, तो इस तरह हम हेरिडिटी को, अगर इन दोनों के बीच में मिलाप हो जाए, जो आने वाली नस्ल हो उनकी हेरिडिटी बेहतर होगी. तो इनका मानना है कि इस थ्योरी का मानना है कि हमें पॉजिटिव यूजेनिक्स जो है वही इख्तियार करनी चाहिए. यानी इंटेलिजेंट एक नस्ल जो है, पौध जो है वो आगे बढ़ानी चाहिए, और जो नॉन इंटेलिजेंट जो है इनको नहीं रखना चाहिए, इनकी शादी नहीं करनी चाहिए. बल्कि अगर मैं आपको कहूँ कि दे वांटेड स्टेरिलाइजेशन ऑफ दैट such people, so that's called a negative eugenics. Okay, so these were his thoughts. He believed that he belonged to a very intelligent class. That's why he wanted to have extramarital relationships so that more and more intelligent people can be born out of their relationships. Okay, so in 1904 he discussed a survey paper by Francis Galton, co-founder of eugenics, saying, I believe it's in the sterilization of failure. जो फेलियर है यानी जो ज़्यादा प्रोडक्टिव लोग नहीं हैं, इंटेलिजेंट लोग नहीं हैं, दे मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड एंड नॉट इन द सिलेक्शन ऑफ सक्सेसेस फॉर ब्रीडिंग. तो सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है. यू मस्ट नॉट ओनली select the successes for breeding, but the other way you have to sterilize the people and you should not allow them to marry and produce. That the possibility of an improvement of the human stock lies. So इसको एक ही इम्कान लगता था, एक ही तरीका लगता था कि ह्यूमन स्टॉक जो है वो इम्प्रूव हो जाए. दैट्स सिलेक्शन ऑफ successes for breeding and sterilization of the failure. Okay, you may agree or not. It's perhaps most of you might not agree with it. Okay, he was influenced by a lot of scholars like H.T. Huxley, Plato, Jonathan Swift, Julius Verne, Edgar Allan Poe, Charles Dickens, Victor Hugo, and Rudyard Kipling. And he has influenced many scholars like Isaac Asimov, Ray Bradbury, Aldous Huxley, C.S. Lewis, Alan Moore, George Orwell, Frank R. Paul, etc. So these are people who either had influenced him or were influenced by him. Okay, so there's some interesting facts I will tell you about this author. That his second wife, that's Jane, she was his student.
Okay, his lover Rebecca West was a feminist. Okay, Rebecca West was her lover. She was not the wife, but the author had extramarital relations with her. Okay, science fiction was the least of his writings. If you see the volumes of his writings, you will find the least number of books possess this quality. They are science fictions, but yet he is, but it's the thing what he is best known for. Okay, after settling in Sanget on the Kent coast, Wallace slowly gained his physical health and acquired a lifelong passion for cycling. So, उसकी जब सेहत ठीक हो गई किसी बीमारी के बाद, तो फिर उसको साइकिलिंग की तरफ इतना रुझान पैदा हो गया, तो उन्होंने एक बार कहा था, एवरी टाइम आई सी एन अडल्ट ऑन अ बाइसिकल, जब भी मैं किसी नौजवान को बाइसिकल पर देखता हूँ, आई नो लॉन्गर डिस्पेयर फॉर द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन रेस, तो मुझे इंसानों की नस्ल के बारे में कोई गम नहीं रहता है. सी दैट दे विल फ्लोरिश बिकॉज दे आर एक्सरसाइजिंग. ओके, सो ही फेवर दैट साइकिलिंग इज़ अ वेरी गुड जॉब एंड इट मस्ट बी डन. It helps you to stay physically fit. Okay, West and Wells. West, as I just told you, she was the lover of the author. West and Wells called themselves Panther and Jaguar. Both are wild creatures, and their son Anthony, should I say he was the illegitimate son? Of course. Their son Anthony West later wrote about his parents' difficult relationship in Aspects of a Life. तो ये जो बच्चा पैदा हुआ तो उसने जो किताब लिखी है Aspects of a Life, अपने पेरेंट्स की इस typical relationship के बारे में उसने लिखा है. In his novels, Wells used his two wives, Amber Reeves, Rebecca West, Odette Kane, and all the passing mistresses as models for his characters. तो उसने इनको अपनी तहरीरों में ज़िंदा रखा है, अपनी बीवियों को भी और अपनी लवर्स को भी. इन कैरेक्टर्स जो इसने इस्तेमाल कर उनके नाम लिए हैं. Wells was diabetic and co-founder in 1934 of what is now Diabetes UK, the leading charity for people living with diabetes in UK. ओके, खुद भी डायबिटिक जो है इस तंजीम का एक को फाउंडर रहा है और जो एक चैरिटी हाउस है लोगों की मदद करता है यूके में, इसके साथ वाबस्तगी है इसकी. About his death, he died of unspecified causes in 1946 at his home at 13 Hanover Terrace, Regent's Park, London. In his preface to the 41 edition of The War in the Air, Wells had stated that his epitaph should be, वो चाहता था कि उसकी कब्र पर जो कुतबा लगाई जाए उस पर लिखा जाए कि I told you so, you damn fools. लेकिन एक नेगेटिव कमेंट था, but his wish was not granted and he was cremated. लेकिन इसको जो है दफन नहीं किया गया बल्कि उसको जला दिया गया, इसलिए एपिटैफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. Many of his predictions for the future came true. He was a very visionary fellow, so the father of futurism, some people call him, but today he's best known as the father of science fiction. जो नाम उसने कमाया वो यही था कि he was the father of science fiction. So thank you very much with this great person. You might disagree with his thoughts, but there is no denying the fact that he was a very, very intelligent brain. Okay, so we'll be discussing the story Footprints Without Feet in the next video. Thank you very much.